Hello friends. So 9.4 exercise and I'm I think 1 2 3 and question number 6 over of 9.4 exercise. Okay. So let's start number 4, number 5. So up to 6 over and then we will continue with the 7. Sec square x into 10y dx plus sec square y 10x dy n equal to 0. Okay. चलो टू सेपरेट dy and dx. Number 1 point is subject the dy by dx. So this term as it is because this is the dy term and taking this term other side. So sec square y 10x dy equal to this term other side becomes negative. So minus sec square x 10y dx. Now dy side we need y. So sec square y and 10y. These two term about y. So taking 10y downside and taking 10x here downside. So here 10x downside, so sec square x upon 10x and dx. And this side all y arrangement. Okay, so arrangement is ready. Sec square y upon 10y dy equal to minus sec square x upon 10x dx. Y side all y, x side all x. After separation, taking integration both the sides. So taking integration both the sides. Okay. So integration sec square y upon 10y dy equal to minus outside integration sec square x upon 10x dx. Now this is the integration sum and two sums of integration. So derivation, integration sec square y upon 10y sec square x upon 10x term same, just x and y form. How to find the integration? याद करो. Okay, so we know that derivation of 10 is sec square. 10 is sec square. तो क्या करेंगे? हम क्या करते थे इंटीग्रेशन में? Taking the function equal to t because derivation of 10 is sec square. बट यहाँ पर दो टर्म है, दोनों में हमें सपोज करना होगा. चलो both the integration combine. Let 10y equal to u and 10x equal to v. ओके, चलो 10y डेरिवेशन. हाँ जो here dy, तो with respect to y, this side y, this side u, this side x, this side v. जो हम वहां पर करते थे वैसे ही करना है. तो 10y डेरिवेशन sec square y and u derivation is 1 dy and du. Here with respect to y, here with respect to u. So this side dy and this side du and derivation of 10x sec square x dx v is 1 and dv. Hello, now putting all data in our integration. This term ready sec square y dy and here also ready sec square x dx. So integration sec square y dy equal to 1 and du and 10y is u equal to minus integration sec square x dx equal to 1 and dv and 10x equal to v. बोलो 1 by u 1 by u integration log mod u. Do not write mod, just write the log u equal to minus log v
all log. So do not put only c. We have to put log c. So plus log c. Okay. So therefore log u. So this is here minus and here plus. So log c minus log v. Log a minus log b. Log a upon b. So log c upon v. और दोनों साइड log है तो log log कैंसल तो u इक्वल टू आंसर c बाई v तो u into v इक्वल टू c और पुटिंग द वैल्यू ऑफ u and v u is 10y v 10x तो 10y 10x equal to c it means 10x into 10y equal to answer is c. Are you ready? Simple. Now next number 5. E raised to x plus e raised to minus x dy minus e raised to x minus e raised to minus x dx equal to 0. तो taking this term other side and कहीं पर भी y नहीं है तो all this term x side arrange. तो meaning is e raised to x plus e raised to minus x dy equal to this term taking other side. So e raised to x minus e raised to minus x dx. Now कहीं पर भी y तो नहीं है तो taking this term other side तो dy is alone and this term other side तो all x other side. Okay, so dy equal to e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x dx. dx as it is. So, हो गया separation. Now taking integration. So this side only dy and this side integration e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x dx. This integration is very easy and this is also very easy but यहाँ पर हमें क्या करना होगा function and derivation. This is the exact sum of your 7.2 exercise. Taking this term equal to t because e raised to x derivation is e raised to x and e raised to minus x is e raised to minus x into minus 1. So taking e raised to x plus e raised to minus x equal to t. Now derivation e raised to x is e raised to x. E raised to minus x into minus 1 dx 1 and dt. Now putting all data in our integration, so this is only dy and here e raised to x minus e raised to minus x dx equal to 1 dt and downside e raised to x plus e raised to minus x which is t. Now integration is possible. dy is y 1 by t is log mod t plus log c. y equal to log c into t. Log and addition to product. Removing log to other term e raised to and putting the value of t. And what is t? E raised to x plus e raised to minus x. So e raised to x plus e raised to minus x into c and this is our final answer. Okay. तो ये था आपका नंबर 4 एंड नंबर 5. 6 हमने कर लिया है. नेक्स्ट वन टेकिंग द नंबर 7. हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर 7 एंड नंबर 8. ओके, y log y dx minus x dy and equal to 0. तो taking x dy other side but dy always right left side. जो here x dy is minus x dy negative, so we have to take x dy other side.
पर एक्स डी वाई हम लेफ्ट साइड लिखेंगे, तो एक्स डी वाई टेकिंग अदर साइड, तो एक्स डी वाई इक्वल टू वाई log वाई dx, बराबर, वाई log वाई dx, ओके, बराबर, एक्स डी वाई इक्वल टू वाई log वाई dx. नाउ dy साइड y टर्म, तो y log y and x other side, so 1 upon y log y dy equal to x other side, so 1 by x dx. Now, taking integration both the sides, so 1 upon y log y dy, other side integration 1 by x dx. Now other side 1 by x is easy, but what about 1 upon y log y? So taking log y equal to t, so derivation of log y is 1 by y. All ready? So taking log y equal to t, so derivation of log y is 1 by y dy 1 dt. Okay? 1 by y and dy is 1 dt, and 1 upon log y means t. Log y means t, and 1 by y dy equal to 1 and dt. And this term as it is 1 by x dx. Now 1 by t and 1 by x. So 1 by t is log t equal to 1 by x is log x, and all log, so last one putting log c. Therefore log t equal to log cx. Log log cancel, t equal to cx, and putting the value of t. So what is t? Log y. So t is log y, so log y equal to cx. This is our final answer. Otherwise we can write removing log, so other term e raised to, so e raised to cx. Okay, so next number 8. X raised to 5 dy by dx equal to minus y raised to 5. एक काम आपको, वन मोर स्टेप जो आपको याद रखना है, माइनस साइन राइट साइड रखो, बराबर, अगर लेफ्ट साइड है तो राइट साइड ट्रांसफर करो. ओके, माइनस साइन राइट साइड लिखनी है बस. चलो, तो हाउ टू अरेंज, तो dy साइड y पावर 5, तो y पावर 5 टेकिंग राइट साइड, dx अदर साइड, एंड x पावर 5 राइट साइड. तो 1 अपॉन y power 5 dy, this minus dx other side, and x power 5 downside, so 1 upon x power 5. Therefore 1 upon y power 5 is y raised to minus 5 dy equal to minus x raised to minus 5n dx. Ready? After separation, taking integration. So taking integration both these sides. So integration y raised to minus 5 dy minus integration x raised to minus 5 and dx. Okay? Or how to find the integration? 1 power increase divided by power. So y raised to minus 4 upon minus 4 equal to minus bracket x raised to minus 4 upon minus 4 bracket over and no log, so plus c. So this is minus 1 upon 4 y raised to 4. Y power minus 4 downside becomes y power 4, and here minus minus plus equal to 1 upon 4 x power 4 and plus c.
Now integration over, sum also over, but simplification is possible. How to simplify? Taking this term other side and c other side. So 1 upon 4 x power 4 plus 1 upon 4 y power 4 equal to minus c. Ready? Now 1 by 4 common and other side. So 1 upon x power 4 plus 1 upon y power 4 equal to minus c by 4. जो आपका जो लास्ट आंसर है ना, लास्ट आंसर वहां पर c by 4 नहीं होना चाहिए. हाँ, e raised to cx पॉसिबल, बट c by 4 इज नॉट पॉसिबल. c by 4 नहीं होना चाहिए. बराबर. कि अगर यहाँ पर चलो आपको 2 इंटू सी मिले, कि 3 इंटू सी मिले, कि c by 3 मिले, कि माइनस 3c, ऐसा कुछ आपको अगर मिले, अगर आपकी टर्म कुछ ऐसी हो तो आपको क्या करना है? आपको पता है, टेकिंग द ईयर c डैश and this whole term equal to put c. Okay, so 1 upon x power 4 plus 1 upon y power 4 equal to only c, and write here c equal to minus c dash by 4. Done? So this is your question number 8. Now question number 9, not IMP but integration term lengthy. You know that sin inverse x integration not possible. So how to find the integration of sin inverse? UV method. ना आपको शायद याद भी होगा कि वो जो लेंथी था. And here no y term. So just taking the dx other side and then both the side integration. Okay? चलो, so dy equal to sin inverse x and dx other side. Now taking integration both the sides. So integration dy equal to integration sin inverse x dx. Integration dy is easy, but integration sin inverse x dx UV method. So u equal to sin inverse and v equal to 1. Okay, so let u equal to sin inverse x and v equal to 1, and हमारा 100% इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. देन राइट वी विल राइट प्लस सी एट लास्ट. तो तब तक क्या होगा? dy as it is, and here applying our uv rule. तो u as it is means sin inverse x as it is, integration of 1 dx minus integration, two terms are d by dx of u. U means sin inverse x and integration of 1 dx whole dx. Ready? Now therefore integration dy equal to sin inverse x, integration 1 means x, minus integration d by dx of sin inverse 1 upon under root 1 minus x square into integration of 1 is x and this whole dx as it is. So integration dy equal to x sin inverse x minus integration, and this term is x upon under root 1 minus x square dx. तो अभी हमें एक इंटीग्रेशन फाइंड करना है. तो हियर x स्क्वायर, याद करो इंटीग्रेशन चैप्टर. x स्क्वायर एंड x कॉम्बिनेशन मींस फंक्शन एंड डेरिवेशन. तो टेकिंग x स्क्वायर इक्वल टू t, देन ओवर एंड नो प्रॉब्लम. अदर एज इट इज dy equal to
x इंटू साइन इनवर्स x नहीं, बट हमें सपोज करना है। अब टेकिंग x स्क्वायर इक्वल टू t, so 2x dx equal to 1 dt. So x dx equal to 1 by 2 dt. Now putting all data in our integration, so this integration dy as it is equal to x into sine inverse x as it is minus integration x dx equal to 1 by 2 dt. And downside under root 1 minus and x square means t. So under root 1 minus t. Okay. Therefore integration dy equal to x into sine inverse x minus 1 by 2 taking outside and downside t power 1. But whole power is not 1, so upside. So integration and 1 minus t whole power minus 1 by 2n dt. Therefore अभी तो इंटीग्रेशन ही होगा, दिस इंटीग्रेशन पॉसिबल, तो इंटीग्रेशन dy मीन्स y x इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1 by 2, 1 पावर इंक्रीज डिवाइड बाई पावर, सो 1 माइनस t पावर 1 by 2 अपॉन 1 by 2 and coefficient of x means coefficient of t which is minus 1 and no log, so plus c. So y equal to x into sine inverse x, 1 by 2 cancel, minus minus plus 1 minus t raised to 1 by 2 means under root 1 minus t and plus c. Okay. Now putting the value of t, what is t? X square. So final answer y equal to x into sine inverse x plus under root 1 minus x square and then plus c. And this is your final answer, method and answer. Okay. हार्ड नहीं था, लेंथी था, क्योंकि यू भी मेथड है एंड बाद में भी हमें एक टर्म इक्वल टू टी सपोज करना है, सो सम इज लेंथी. डन. तो दिस इज योर नंबर 9. हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वन आफ्टर कंप्लीटिंग अप टू 9, देन नेक्स्ट 10 e raised to x 10y dx plus 1 minus e raised to x sec square y dy and equal to 0. Okay. तो क्या करें हम, dy term as it is and taking this term other side. So 1 minus e raised to x sec square y dy equal to minus e raised to x 10y dx. तो अब ये काम करते हैं, 1 minus e raised to x and taking minus sign common, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका, e raised to x minus 1 sec square y dy minus e raised to x 10y dx. तो माइनस माइनस कैंसल, पहले कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. चलो नाउ dy साइड y टर्म sec square y and 10y, तो 10y टेकिंग डाउन साइड, इट मींस sec square y upon 10y dy equal to minus minus cut, तो e raised to x upon e raised to x minus 1 and dx. Separation ready. Now taking integration. So taking integration both the sides. So integration sec square y
अपॉन 10y dy इंटीग्रेशन e raised to x अपॉन e raised to x माइनस 1 and dx। ओके, चलो क्या करेंगे हम? 10y अपसाइड sec square y, डाउन साइड 10y, तो डेरिवेशन ऑफ 10 इज sec square, अभी हमने एक सम किया था वैसा ही है। एंड इन दिस e raised to x डेरिवेशन इज e raised to x, तो e raised to x इक्वल टू टेकिंग t। ओके, चलो तो लेट 10y इक्वल टू u एंड e raised to x इक्वल टू v। डेरिवेशन ऑफ 10y sec square y dy 1 and du e raised to x is e raised to x dx 1 and dv। Now putting our data in our integration, sec square y dy 1 and du and 10y means u, e raised to x dx means 1 dv and this e raised to x means v, so v minus 1। log mod and over log mod u, it means log u equal to log v minus 1 plus log c, therefore log u, and here we can write log c into v minus 1 and log cancel, so u equal to c into v minus 1। Putting the value of u and v, what is u? Log 10y c into bracket v e raised to x, so e raised to x and minus 1। okay, so this is our final answer। so now how many sums over? अगर आपको स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है बराबर, तो up to 10 over, बराबर, you can see this up to 10 over। okay, नेक्स्ट वन जो हेडिंग है कि फॉर each of the differential equations in exercise 11 to 14, 11 to 12, 13 and 14, find a particular solution satisfying the given condition। तो 11, 12, 13, 14 आप चेक करो कि आफ्टर द क्वेश्चन देर इज ए वन कंडीशन कि y इक्वल टू एन एक्स इक्वल टू y इक्वल टू एन एक्स इक्वल टू, बराबर। तो बस लास्ट आंसर में हमें वो कंडीशन यूज करनी है। एक चेंज हो रहा है यहां पर, बराबर, कंडीशन यहां पर कंडीशन का यूज हो रहा है। ओके, हाँ, तो कंडीशन तो बाद में, पहले जो हम यहां तक काम करते थे वो तो करना ही है हमें। चलो फर्स्ट वन, नो y टर्म, so dx other side and this whole term down side, therefore dy equal to 1 upon x into x square minus 1 dx, down side, dx other side, or after separation taking integration। therefore integration dy equal to integration 1 upon x into x square minus 1 and dx। Are ready? Left side no problem, राइट साइड क्या करेंगे? राइट साइड तो एक तो फिक्स है कि हियर x माइनस 1 एंड x प्लस 1, तो वी कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन आउट ऑफ 3 मेथड, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो a अपन b अपन सी अपन मेथड नंबर 1 पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बट वो हमारी लेंथी हो जाएगी।
मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 7 में एक दो सम थे, मैंने शॉर्टकट किया था वैसे ही, आपको याद होना चाहिए। बराबर, चलो तो क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइड 1 तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर सेपरेट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो आउट ऑफ दिस माइनस कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसल एंड हियर वन टाइम एक्स कैंसल। देयरफॉर dy माइनस कॉमन, सो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस हियर one time x left in numerator and downside x square minus 1 and dx. Now here x square minus 1 cancel, so dy equal to minus integration only 1 by x plus integration separate करना पड़ेगा हमें, क्यों? because this is x upon x square minus 1। बराबर, आपको पता है हियर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी एंड दिस वन डायरेक्ट पॉसिबल, तो टेकिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। सो डेरिवेशन 2x dx इक्वल टू 1 dt, तो x dx वी हैव x dx, so x dx इक्वल टू 1 by 2 dt। देयरफॉर इंटीग्रेशन dy माइनस इंटीग्रेशन 1 by x dx and plus integration x dx equal to 1 by 2 dt and x square means t, so t minus 1। now solving all integration dy, तो answer is y minus log x plus 1 by 2 outside and 1 upon t minus 1 is log mod t minus 1, तो log t minus 1। एंड जो कभी भी ये कंडीशन वाले समय ना, कभी भी कोई भी समय कंडीशन वाले समय एवरी टाइम पुट सी, द यूज ऑफ दिस कंडीशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। आपको सी फाइंड करना होगा, बस एवरी टाइम पुट सी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। बराबर, तो क्या आपने याद रखा, कंडीशन टाइप सम्स एवरी टाइम ऑलवेज पुट सी एट लास्ट एंड डू नॉट कंबाइन। सी इज सी आपको फाइंड करना है। यूज ऑफ दिस कंडीशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो नेक्स्ट वर्ड पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, देयरफॉर y माइनस log x प्लस 1 by 2 log, what is t? t means x square, तो x square minus 1 and plus c। now putting x equal to 2 and y equal to 0, our given condition, in equation number 1 x equal to 2 and y equal to 0 in equation number 1। कंडीशन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नंबर 12 x y equal to 0 and x equal to 2 है ना। हमने 12 इसलिए दिया क्योंकि 11 पार्शियल फ्रैक्शन कंपलसरी यूज करना है 11 में, 12 में नहीं करना है, तो यहां पर हो गया। बराबर, 12 11 थोड़ा लेंथी है। चलो पुटिंग द कंडीशन इन इक्वेशन 1, y equal to 0 minus x equal to 2 minus log 2 plus 1 by 2 x equal to 2, 2 square 4, 4 minus 1 3 log 3 and plus c। 2 LCM नहीं, 2 LCM नहीं, combine these two, c as it is, बराबर, at last plus c as it is and taking this 2 LCM only for these two terms, तो 2 here multiply, so minus 2 log 2 plus log 3 divide by 2 and plus c। okay,
1/2 as it is, bracket log 3 and 2 make the power. So log 2 square means log 4. So log 3 minus log 4. And plus c. Done. So 0 equal to 1/2 log 3 minus log 4 means log 3/4 plus c. So c equal to, take other side, minus 1/2 log 3/4 and put the value of c in equation number 1. तो यहां पर आप क्या पुटअप करोगे? माइनस 1/2 log 3/4 एंड ऑल लॉग टर्म. लॉग कैलकुलेशन आपको करना है. इफ यू एनी डाउट देन इन योर नेक्स्ट लेक्चर, अगर मुझे याद आ गया तो हम ये सोल्व करेंगे. ओके, चलो एक काम करो, अभी कर देता हूं. बराबर, दिस कैलकुलेशन इज रेडी. तो पुटिंग 2 and 0, x equal to 2 and y equal to 0, तो here 0, here 2, here 2 square 4 minus 1 3, तो 1/2 log 3 and plus c. देन हमने क्या किया? c तो हमें फाइंड करना था, तो जस्ट कंबाइनिंग दिस टू, तो 2 LCM, तो माइनस 2 log 2 प्लस log 3 होल डिवाइड 2 and प्लस c. 2 मेक द पावर, तो 2 square 4, तो log 3 minus log 4 and whole 1/2 and then plus c, तो 1/2 log 3/4 plus c, तो c equal to, take other side, तो minus 1/2 log 3/4. Now putting the value of c in equation number 1, putting c equal to minus 1/2 log 3/4 in equation number 1. So this is your equation 1. Y equal to minus log x plus 1/2 log x square minus 1 and plus c, and c equal to minus 1/2 log 3/4. चलो एक काम करते हैं, 2 LCM, तो अदर साइड 2y minus 2 log x plus log x square minus 1 and minus log 3/4. बराबर, 2 LCM, तो here 2 मल्टीप्लाई, तो 2 log x प्लस here, यहां पर तो LCM 2 है, तो ओनली log x square minus 1 and minus log 3/4 and all divide to other side multiply, तो other side 2y. ओके, तो 2y equal to here minus, here plus and here minus. बराबर, तो log x square minus 1, चलो minus 2 log x means can we write log x square, एंड ये दोनों कंबाइन करते हैं, तो log a माइनस log b, तो log a अपॉन b मीन्स x स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 3/4. 2y इक्वल टू माइनस log x स्क्वेयर, पहले प्लस वाली टर्म लिखते हैं, तो log 4 x स्क्वेयर माइनस 1 होल डिवाइड 3, 4 upside, तो 4 into x square minus 1 whole divide 3 and minus log x square. Now log and subtraction, तो again division, log 4 into x square minus 1 whole divide 3 and whole divide x square. Removing log, तो other term e raised to, तो e raised to 2y equal to 4 into x square minus 1 upon 3x square and 3x square taking other side, so 3x square into e raised to 2y equal to 4 into x square minus 1. This is our final answer. जहां पर c नहीं होगा, बस जो जहां पर c है, यहाँ पर c means constant, it is called general solution.
dy by dx type equation is a differential equation, and this condition is called initial condition. And putting the initial condition in general solution, then जहां पर c नहीं है तो वो जो आपका आंसर है वो क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूडिंग c, including constant is a general solution. Condition is called initial condition, and this without c answer is called particular solution. Done? चलो तो ये था आपका नंबर 12. बीच में एक नंबर 11 बाकी है, तो वी विल सॉल्व नंबर 11, देन 13, 14 illustration in our next lecture. होगा.